Good morning. We have been discussing radial wave functions in the last few classes और इसी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश हमने की है और रेस्ट एक मिनट हाँ सो आपको सिग्निफिकेंस ऑफ these things is clear. I think it should be clear to you. The first one tells you about the radial wave function, tells you about how the amplitude of the wave varies as a function of radial distance. So the point where the node lies, where is the maximum amplitude, where does it turns negative, positive to negative, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको जो वेव नेचर है वो इसमें होता है जो रेडियल वेव फंक्शन कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर जो हम दिखा रहे हैं एंड सुष्मिता सो अब कोई नॉक नहीं करेगा कोई ईमेल भेजा हुआ है सो ये सारी चीज़ें So radial wave functions tells you about where the amplitude is maximum, where does the node lies, वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा नोड वाला पॉइंट कहाँ पे है दूसरा square of that thing tells you about electron density capital R square plotted on y-axis and then we multiply that with 4 pi R square you get the probability. So now sorry there's spelling mistake over here and then you have so different types of wave functions. अब आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि कोई भी वेव फंक्शन रेडियल वेव फंक्शन कहा जाए आप उसको का नेचर ऑफ कर्व बता सकें and then you should be able to tell how the electron density profile will look like and how the probability profile will look like the way we have discussed yesterday and so as an exercise I had given you 4s 4p 4 5 all orbitals in the fourth shell. Can you draw the radial wave function, the radial density function and radial probability function, three functions for all. Predict those curves without knowing an actual equation. You don't try to worry about the actual equation, but if you what you learn from these patterns that then you can easily get draw it. So एक है exponential decay, दूसरा है peculiar nature of the curve of s orbital at the nucleus, near the nucleus, right? S orbital has maximum electron density, maximum amplitude at the nucleus, and so maximum electron density over there. So ये सारी चीजें और फिर आप स्क्वायर करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते हैं you get to know about the where the position of maximum probability is and that point is most probable radius for 3s 3p 3d. ये सारी चीजें आपको ठीक है और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो आपको देखने को मिला 3s का जो रेडियस है वो it is larger than 3p and 3d is so gradually you can see it is shifting to the left hand side and the scale is given you can clearly see that it is decreasing 3s 3p 3d. So all these things in case of hydrogen atoms 3s 3p 3d all have equal energies, they are degenerate, okay. And then we discussed how the this orbitals if you draw a three dimensional अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मैपिंग करते हैं सेंटर में कितना है इधर कितना है सेंटर से बाहर की तरफ तो ऐसा ही कुछ पैटर्न निकल के आता है थ्री डायमेंशनल जो कि ये जो कलर का शेडिंग है ब्लू और वाइट का आप देख रहे हैं अंदर में डार्क फिर वाइट हो जा रहा है नोड आ गया corresponding to the net then again it gets blue and like that. So all these things will so it will be
at equal distance in all direction at this particular distance, किसी भी न्यूक्लियस से बाहर की तरफ किसी भी डायरेक्शन में आपको ये नोड मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे एट डिस्टेंस दैट इक्वल इस डिस्टेंस पे, तो एक स्फेरिकल शेल बन जाएगा। सो द सरफेस, nodal surface looks like a spherical shell, okay, in this particular case. So quantum numbers we have seen, and we have now learned about that. N and L are important for radial wave function. L and ML will come into picture for the angular solutions. The angular wave functions require these specifications. And energy of hydrogen atom or hydrogen-like atoms depends only on the principal quantum number. But for multi-electronic system, as I have been telling you along, there will be L determining a small part of the energy. So that being said, so what is the significance of L? This quantum number L tells you that the angular momentum is quantized. It cannot have arbitrary value. It can have specific values as given by this formula. L into L plus 1 under root h cross. Okay, L can have integer values starting from 0 to any number you can imagine. It is possible. And if L is the electron, now the how ये तो वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो स्पेसिफाई हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड इज क्वांटाइज्ड, its direction is also quantized, and that directionality कि वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसे ओरिएंटेड होगा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, वो आपको मिलता है एम एल, सॉरी ये सुपर सबस्क्रिप्ट होना चाहिए एम एंड दिस सबस्क्रिप्ट एल. सो दैट component along the z axis, z component of angular momentum is given by this third quantum number ml. So mlh cross is the component along the in. So one thing that you will I would like to tell you is that yeah, this point, so this angular momentum that we are talking about is something that is interesting. So ये आपका angular momentum है ऐसे. So suppose the electron is moving in a, so apply right hand thumbs rule. So ये जो आपको डायरेक्शन मिल रहा है, thumb, the direction of your thumb, this is your, so that is the importance of this thing. It tells you about how the electron is moving, what is the angular momentum, how what is the magnitude of angular momentum. Okay, and then if you have, so if L is equal to 2, we know that it can have, so what is the orientations that it can have in three-dimensional space. So you look at this picture, the length, we for vector, if you are trying to draw a vector, denote the length of the, it is shown by arrow, और एरो कितना बड़ा होगा वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया. तो आप देखिए ये जो मैग्नीट्यूड है, the length of the arrow is same in all these cases. So magnitude of the, in these 5 pictures, magnitude of the angular momentum vector is same. Okay, but the orientation is different and it cannot have any, मतलब कोई ऐसे ही randomly कोई orientation नहीं हो सकता है. Either this, when the z component is somewhere here, mlz, ml plus 2 आप देख रहे हैं ये यहाँ पे वैल्यू है, और जब इसको आप ml plus 1 हो सकता है, इसका मतलब देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पे था इसका हाफ हो गया, ये हाफ है इसका. देखिए ओरिएंटेशन कैसे चेंज हो रहा है. लुक एट द इलेक्ट्रॉन, पुट द इलेक्ट्रॉन हियर, ऐसे सोचिए इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग दिस पाथ एंड यू अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल. तो ये ऐसे थंब को रोल करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरो, वो जो सर्कुलर एरो दिया हुआ है उसमें रोल करो ऐसे, कर्ल योर फिंगर्स इनवर्ड्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरो. ये जो ब्लैक एरो है, ब्लैक एरो के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए एंड लेट द थंब पॉइंट स्ट्रेट आउट योर थंब एंड
द डायरेक्शन ऑफ दैट इज योर थिंग। तो आप देख रहे हैं z कंपोनेंट यहाँ पे घटता जा रहा है, एंड व्हेन ml इज 0 दैट मीन्स z कंपोनेंट इज 0, z component is 0, z component here is maximum, so that is the meaning of this। उसके बाद देखिए तो ये ऐसे अगर टर्न कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर ऐसे हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो अब आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, इट विल पॉइंट इन अ डायरेक्शन लाइक दिस। So now the z component is negative, right? And see, so when you have this thing, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, now it is turning more, इसका टर्न और थोड़ा इधर हो गया, z कंपोनेंट नेगेटिव साइड में डबल हो गया, ये जो पहले यहाँ पे वैल्यू था इसका लगभग डबल आ रहा है वैल्यू, एंड दिस मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय z कंपोनेंट इज गिवन बाय ml h cross, ml h cross is the value, or so ml is the value of ml is 2 here, which is +2, और यहाँ पे उसका हाफ हो गया, आप देख रहे हैं। सो इट इज, सो इसका मतलब ये है कि नॉट जस्ट the quantum mechanics tells you when we analyze these things, the radial wave function, angular wave function, the three set of quantum numbers are generated, तीन set of quantum number generate होते हैं। पहला n tells you about quantization of energy, second tells you about quantization of angular momentum, the magnitude of angular momentum कि कैसे कैसे हो सके, and the third ml tells you about how that angular momentum vector will be oriented in three dimensional space, और वो जो ओरिएंटेशन है उसमें उसको हम डिफाइन करते हैं z कंपोनेंट के टर्म्स में। तो z कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग इफ यू +2। सो अब आपको समझ में आ रहा है ये जो +2 प्लस ml +2 +1 होता था, इसका मतलब क्या है, दिस इज हाउ द z कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग when you are moving from +2 +1 and 0 मतलब अब z कंपोनेंट है ही नहीं। आप देखिए फिंगर्स को ऐसे कॉल कीजिए, द एंटायर एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग दिस डायरेक्शन, देयर इज नो z कंपोनेंट इन दिस। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्वांटम नंबर्स का, ओके। एंड देन यू नो व्हेन यू अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, it is this component, the z component, which is also tells you about the magnetic moment that will be generated, कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, it is the z component, because by convention we take the direction of external magnetic field as z। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, it is by convention we take that as z direction। तो उस z के अलोंग जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा, एंड सो that's why you are seeing this m। so now आप समझ रहे हैं ये क्यों हम लिख रहे हैं, we are writing it as the quantum number is m and the subscript l। the subscript l is that indicates that it is derived from this l, quantum number l। so that was about angular momentum, and it is about the same angular momentum, but we are talking about the orientation, how in three dimensional space the vector is oriented, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। एंड देन द m इज कमिंग विद द मैग्नेटिक क्यों, क्योंकि ये जो z कंपोनेंट हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द सेम z कंपोनेंट दैट गिव्स यू मैग्नेटिक मोमेंट इन व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, दे विल बी certain magnetic moment generated, and that is given by this, okay। so that it determines the z component of angular momentum, and it also determines the magnetic moment in the direction of the magnetic field, okay। so that is why it is written as m subscript l, ठीक है, ml h cross, और इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। so that's how
So this is what we call a space quantization of orbital angular momentum, कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसे वो वेक्टर ओरिएंटेड होगा. देखिए लेंथ ऑफ द एरो इज सेम, है ना, लेंथ ऑफ द एरो इज सेम, the value of magnitude is same, and they are oriented in different ways. So this is a summary of all what was presented earlier, right? So you can see the component z component here. This is the z component in the previous case. Then in the second case, when this is the orientation, this is the z component. ये हमने previous यहाँ पे देखा, z component ये वाला है, यहाँ पे z component आधा हो गया उसका, z component is 0, and here the z component is along negative direction में z component बढ़ गया. So this is your all about z component, primarily यही है, ठीक है. So इस तरह से आप so when you are treating electron as standing wave, these are the things that these are the features that you get to know. आप उसकी properties के बारे में इस तरह से समझते हैं with the use of different quantum numbers. Okay, so these quantum numbers tells you many things. So third point was about space quantization of angular momentum. मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस में वो कैसे ओरिएंटेड होगा वेक्टर, और उसका implications आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम, let us assume electron moving in along this like path, along this black circle like path, और उसमें कर्ल करें फिंगर्स को, तो जिस डायरेक्शन में ये थंब पॉइंट कर रहा है वही आपका ये ब्लू वाला एरो है, विच इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, राइट हैंड थंब रूल, राइट. उसको चेंज किया आपने, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर घूम रहा है तो उसका जेड कंपोनेंट कम हो गया. फिर अगर पूरा का पूरा वर्टिकली फिंगर्स को ऐसे रखा हुआ है आपने और कर्ल कर रहे हैं तो जेड कंपोनेंट जीरो हो गया, लाइक दैट. ओके, so that's how we get to know about these things. Okay, going back to what we were discussing. हम जहाँ पे थे उस पे वापस जाते हैं. वी वर ट्राइंग टू डिस्कस, तो ये मैंने थोड़ा पहले बता दिया. नाउ वी कैन मूव टू द अदर पार्ट. रेडियल वेव फंक्शन हो गया. रेडियल वेव फंक्शन से आपको एनर्जी का आइडिया मिला. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द in terms of, you can define the energy in terms of Rydberg constant, which will change with respect to change in the atom. So you can, we have already discussed these things, the bound state, the unbound state of electrons, so all these things. So continuum of state on the top, that means energy is changing continuously, the electrons are not no longer part of the atom, and that time you will have the energy will become positive, right. उसके नीचे वाले साइड में जितना है, जब तक वो एटम का हिस्सा है, एनर्जी इज नेगेटिव. Okay, so this is something that we have, and we say that this is how we represent this, the degeneracy in this hydrogen atom, which is given by n square in hydrogen atom, hydrogen and hydrogen like. Now we turn ourselves to the angular wave function. Angular wave function, okay, so it depends why we call it angular wave functions. It tells you how the amplitude varies with the change in angle theta and phi. मतलब वो जो एंगल हमने डिफाइन किया था कार्टेजियन, जब हमने कार्टेजियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म किया कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड से आर थीटा फाई, वी फाउंड दैट it splits into three different components. The original wave function splits into three wave function, जो हर एक एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, आर थीटा एंड फाई. तो एंगुलर पार्ट्स को सारा हमने कलेक्ट किया, थीटा और फाई वाला डिपेंडेंस, उसको हमने एंगुलर वेव फंक्शन कहा. इट टेल्स यू अबाउट वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड with respect to theta and phi. So angular distribution, so it's usually, if we try to look at the solutions of this thing, the first function, when it is given by L and ML, these are necessary to describe
write this angular wave function, and so it has generated the first function is overall constant. So no matter what is the angle, the values are same in all the quadrants, and so it generates a sphere. So this is the s orbital, which looks like this, a spherical one. And then in a, if for pz orbital, it is appears like a cos theta function, 3 by 4 5. And then you have other px py functions which have theta and phi coming up. So they all of them have a pattern that will look like two tangent spheres. Okay, ये जो colors का difference है, this is to represent the positive and negative things. So let's try to understand more on this angular wave function. So angular part of the wave function for hydrogen like s orbitals, this is here, and p orbitals, this is the p. So it is not डम्बल. फर्स्ट देखिए, पहली बार जो वेव फंक्शन हम प्लॉट करते हैं p ऑर्बिटल के लिए, वो डम्बल नहीं है. वो फंक्शन जब आप ऐसे ड्रॉ करते हैं cos थीटा, you know, so cos theta function when you are defining for pz orbital, that is थीटा कैसे चेंज करेगा, 0 to 90. अगर आप चेंज करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, और उसके बाद जैसे जैसे आप 90 की तरफ मूव करेंगे, सो थीटा is moving, when it is 90 degree it becomes 0 maximum at here, and then it is gradually it is decreasing in this. So in 3-dimensional space एंगल थीटा आप किसी भी स्क्रीन के बाहर भी आएगा, स्क्रीन के पीछे भी जाएगा, और वो इस तरह का जो बनेगा पॉइंट, वो 3-dimensional स्पेस में एक स्फीयर बनेगा. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट व्हेन ग्रेटर देन 90 जब आप जाते हैं, थीटा टर्न्स नेगेटिव, द cos थीटा वैल्यू इज नेगेटिव. Cos theta is negative here when you are coming in this direction, and then again its values gradually increases and reaches a maximum here when theta is 270 on the negative side, right? मैग्नीट्यूड इतना ही. ओके, फिर यहाँ पे भी नेगेटिव है, 90 180 डिग्री पे, and then you have 270 and then finally 360. So in the first, there are two quadrants where cos theta is positive, there are other two quadrants where cos theta is negative, and that's why you'll see. So when we are detailing about this s and p orbital, this is the point L ml, you know, for s orbital is 0 and 0. So this has a fix for all values of theta, the function has same value, and this is, that's why it is positive everywhere if we write it like this. For pz orbital, it is a cos theta function. So cos theta between 0 to 90, between 270 to 360. So 0 to 90, 0, and this is your 90, and this is 180, this is 270 on this side. So between 270 and 360, 270 and 360, it is positive, theta is positive, you know that. So you will generate this kind of thing. Cos 0 is 1, so the maximum values will appear obtained at this angle. This is called co-latitude. Okay, and cos 90 degree is the function that goes to 0, and here a node will appear. Okay, beyond 90 degrees, the sign of wave function is sign of the function is, sorry, okay, 90 to 270, this one, 90 to 270, we see this area. sorry, इसको थोड़ा सा, so जो दूसरा आपका है 90 to 270, ये वाला है 90 degree, this is your 90, this is 270. 90 to 270, the cos theta is negative, and so we obtain two spheres which are tangent to each other. So two tangent sphere, that's how we draw a p orbital. हमने कहा वेव फंक्शंस, आप देखिएगा जेडीली और इन सब में डम्बल क्यों आता है वो बाद में बताएंगे.
in a short while from now we learn how the dumbbell comes in. But original wave function, the angular part of the wave function when it is plotted in 3-dimensional space, थीटा, ये 3-dimensional ग्राफ बन रहा है आपका. कैन यू रियलाइज दिस? थीटा एंगल in the plane of the stream, the same theta angle out of the plane, behind the plane, in front of the plane, and all arbitrary direction, सब जगह थीटा एंगल आप बना सकते हैं और वो एक 3-dimensional ऐसा बनेगा. ठीक है ना? तो so it will generate a sphere, and so you have positive sign on one part, the upper half, other half is negative. So the color coding, red one is positive and the this one is negative. So जो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ऊपर की तरफ पूरा एक पॉजिटिव साइन के साथ वेव फंक्शन होगा, नीचे की तरफ जो वेव फंक्शन है वो नेगेटिव साइन ऑफ द वेव फंक्शन होगा. सो अब आप प्रोबेबिलिटी निकालने के, सो नाउ we have if we have seen the how the mathematical equation for angular wave function looks like, now we turn to square of the wave function. Squaring will give you the probability of finding the electron at that point. So when you square the profile for the s, look at the profile for s orbital, which is a sphere. Sphere, like, it is positive, either it is positive in all quadrants. When you square it, it will become, the values will, the shape will remain same. The functions जो रेडियल वेव फंक्शन का प्रोफाइल था, सॉरी एंगुलर वेव फंक्शन का प्रोफाइल था, वही स्क्वायर करने पे भी जो एंगुलर प्रोबेबिलिटी या एंगुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्रोफाइल है वो सेम रहेगा. नाउ it this, so s orbital can either be positive in all quadrants or negative in all, so sign will be same throughout 0 to 360, either it will be positive, and squaring will give you the same thing. So another sphere is obtained, there is no change in shape in this particular case for s orbital. What we see here in case of p orbital, however, that when you square it, the function becomes, looks like a dumbbell. जो 3-dimensional स्पेस में एक 2 टेंजेंट स्फीयर था वो डम्बल बन जाता है. कैसे आप सोच सकते हैं? ये 1 था, सो दिस इज द 0 डिग्री 1, एंड जब आप व्हेन यू आर एट द एंगल इज से एट 45 डिग्रीज, कितना cos 45 कितना होता है? कैन यू, हाँ, 1/√2 होता है cos 45. तो उसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1/√2, विच वन इज बिगर, विच वन इज स्मॉलर? ये 1/√2 या 1/2? 1/2 इज लेस, 1/2 इज लेस ना. हाँ, तो अब आप देखिए 45 डिग्री एंगल पे पहले वो यहाँ था, अब वो स्क्वायर करने पे अंदर की ओर आ जाएगा, तो यहाँ वाला जो पॉइंट जो पहले यहाँ था वो यहाँ पे आ गया. तो कैसे वो पिचक जा रहा है और डंबल बन रहा है, यू कैन इजिली गेट द फॉर्म. इस तरह से आप, इफ यू टेक ऑल दिस पॉइंट्स, अगर आप 1 और 90 और 0 90 के बीच में एक ही क्वाड्रेंट को एनालाइज करें कि यहाँ पे क्या वैल्यू है, उसको स्क्वायर करते जाएं, यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे वो कम, मतलब ऐसा एक शेप जनरेट हो जा रहा है विच इज नॉट अ स्फीयर एनी मोर, राइट. तो जैसे 1/√2 को आपने स्क्वायर किया, 1/√2, सो cos 45 was 1/√2 square, that is square of this, when you square किया, which becomes, on squaring this becomes 1/2 और 0.5, और पहले कितना था? 1/√2 का 1.4 होता, इट विल बी अ स्मॉल वैल्यू, लार्जर वैल्यू. सो पहले वो लार्ज था यहाँ पे, अब वो कम हो जाएगा, अंदर की ओर आ जाएगा. ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट, सो इट वाज मूविंग, पहले जो बाहर की तरफ दिख रहा था, अब वो पॉइंट अंदर आ गया. ये आपका फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको आपने
स्क्वायर किया, और इस तरह से पूरा पैटर्न आपका डंबल में चेंज हो जाता है. सो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफिकल 3 डायमेंशनल ग्राफ जो बन रहा है इसमें, वो जो ऊपर स्फीयर बन रहा था वो अब, सो एक स्फीयर ऊपर एक नीचे, टू टेंजेंट स्फीयर. सो वी वर हैविंग टू टेंजेंट स्फीयर्स. सो थोड़ा सा सोच के देखिए कैसे हो जा रहा है. एंड इट बिकम्स लाइक अ डम्बल, लुक्स लाइक अ डम्बल व्हेन यू स्क्वायर इट. तो समझ रहे हैं ना. अब स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन है तो इसमें प्लस और माइनस साइन आप नहीं दे सकते. स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वेन एवर स्क्वायर एनीथिंग. ओके. सो अब आप समझ रहे हैं प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ. प्लस माइनस इज द साइन ऑफ वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड. जैसे अगर आपने वो देखा, मैंने आपको 2 डायमेंशनल फ्रेम में वो रिंग का दिखाया था वाइब्रेशन. ठीक है. उसमें आपको प्लस माइनस करना हो तो एक इमेजिन कीजिए स्टैटिक रिंग है, बाहर की ओर ऑसिलेशन हुआ, अंदर की ओर ऑसिलेशन हो रहा है. तो वो बाहर की ओर जब हो रहा है तो उसको प्लस साइन देंगे, अंदर वाले को माइनस. एक्सपेंशन कंप्रेशन जो पॉइंट पे हो रहा है तो एक्सपेंशन वाला +1 -1, मतलब इस तरह से आपका प्लस माइनस सिंबल का मतलब है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट स्पेसिफाइज. और हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस के लिए, जो सारा डिस्कशन तो एक पर्टिकुलर टाइम में आइदर इट विल बी प्लस ऑन वन साइड और इट विल बी नेगेटिव, राइट. सो इसीलिए ये पिक्चर इस तरह से ड्रॉ किया जाता है. सो जब भी आप बॉन्डिंग दिखाते हैं, देखिए नाउ डेज व्हेन यू आर, व्हाई दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, इसका बॉन्डिंग में बहुत रोल है. आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में बॉन्डिंग पढ़ रहे थे उसमें बार बार मैं कह रहा था कि यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस, टू टेंजेंट स्फीयर्स, नॉट डम्बल. So it is because of this reason. It is for bonding we need to know both the things, electron density as well as the sign of the wave functions. But usually when you are trying, you have, जब आप bonding दिखाएंगे तो it will be like two p orbitals from two different atoms coming together. So it will superposition of two waves, two electron waves interacting. Sign of wave function is important. कि प्लस का प्लस के ऊपर जाएगा, माइनस का माइनस के ऊपर जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. So sign of wave function it is same when they are in phase overlap. Then there is constructive interference and electron density will increase. Amplitude will increase, so electron density will increase in that region. So this kind of, so two tangent spheres is a thing that is drawn in modern books. You will see whenever bonding is shown, anywhere p orbital is shown. Dumbbell is only to indicate the electron density profile. So it gets elongate, plot tends to get elongated when you square it. और ये बहुत difficult नहीं है. We have just seen it is a cos theta function. Just like cos 45 was 1 by root 2, now it becomes 1 by 2, which is a smaller quantity. So ये पहले ऐसा सर्कल था, अब ये पिचक के अंदर आ गया है 1 by 2. So इस तरह से होता जाएगा हर पॉइंट पे. तो इट विल 1 का स्क्वायर 1 होगा, that is no problem, it will remain. So when you are squaring this cos 0 is 1, so 1 का स्क्वायर 1 होगा, it will be at the same position. But cos 45 वाले पोजीशन जब आ जा रहा है तो वहां पे वो कम हो जा रहा है, तो इसलिए वो पिचक के डंबल बन जा रहा है. ठीक है ना. सो बहुत ध्यान से ये सब चीजें देखिए, ऑब्जर्व कीजिए. अभी आप सिर्फ जो वेव फंक्शन का प्रोफाइल है उसको ऑब्जर्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा. So double tangent spheres to dumbbell, this is the transformation that we see when it is squared. Very fundamental, but most of the people ignore it, do not go to these things. ठीक है कि डम्बल कब बनेगा. So अब nodal surface angular nodes, so all these p orbitals have the angular function, wave function shows nodes, a nodal plane like this. So px, it is the lying along the x plus x and minus x direction. The two tangent spheres are lying along that. And this is your जो ये दिख रहा है ये nodal plane है. The nodes appear like a plane
and we say the shape of the it looks like a plane. जैसे कि radial node जो था वो it was generating a surface which was appears like a spherical shell, but here the nodes, if you connect all the points where node appears, it will generate a nodal plane. The surface is like a plane. Okay, so that is, so number of nodes here what you found in angular is equal to L, number of nodes. So P L is equal to 1, number of nodes is 1. So number of nodes is equal to L, number of nodes is equal to L. ठीक है. So total number of nodes in a, अगर कोई इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए ऑर्बिटल के लिए, तो एंगुलर प्लस रेडियल दोनों मिलाकर के आप बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है, उसमें कितने एंगुलर नोड्स होंगे, कितने रेडियल नोड्स होंगे. So all those things you can specify, you can say that. So p orbital is like this, number of radial nodes we have already specified, n minus l minus 1. Similarly, if we move to the L, when L is equal to 2, it is d orbitals. We are talking about d orbitals, and this is how the d orbitals look like. So these are three types of इसमें क्या आप देख रहे हैं, जो lobes है, lobes of the orbitals. So we say that it is having, d orbitals have 4 lobes, 1 2 3 and 4, 4 lobes, 4 lobes of orbital. ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मैपिंग है वो इस तरह से जो बनता है उसको हम लोब्स कहते हैं, लोब्स ऑफ द ऑर्बिटल. सो p orbitals has 2 lobes, d orbitals have 4 lobes, right? And the pattern is something like this: dxz, dyz, dxy. This is the, to indicate the sign of wave functions. Color coding has been done. Okay, minus minus, plus plus, minus on this side, minus on the back side, that you have like this. So zx, that means you have dxz or dyz, dxy. How do we draw this? अगर xyz हमने coordinates define किया हुआ है, then the electron density, the lobes are pointing along the z and x. Okay, so along one of the axis, so it is in between the axis, not along the axis, in between the lobes, directed in between the z and x axis. dyz, this is again, so that is electron density along the lobes in between z and x. dyz में क्या है? Sign of the wave function is important. So along this plus plus, along this minus minus, so g rate and g rate. So you also find out the symmetry of these orbitals based on this. Whenever you have a p, like p orbital, so suppose this is your, how do you find the symmetry of orbitals? So this is to indicate the color, plus sign of the wave function on this side, minus sign on the other side. So taking from center, if you move certain distance on this point A, if you move the same distance along this point B, sign of the wave function changes. So if you move a certain distance along Z, if you move a certain distance along minus Z, the sign of the wave function changes, and that's, we call it
antisymmetric with respect to the center, and so it is termed ungyrid. This is ungyrid. But when you are talking about this thing, plus sign, sorry, this is also plus sign. So when you are moving a certain distance in this direction, same distance on this direction, diametrically opposite, and the sign of wave function remains same. Sign remains unchanged. So point A, point B remains. So that's how unchanged, and that's why we call it gyrid. इसको gyrid कहते हैं, ठीक है. So this is the symmetry in terms of, this is gyrid. Ungyrid means you are talking about symmetry of the orbitals. I think ये first semester में हमने discuss किया था gyrid और ungyrid का, so I think it is not much required. And then I also told you, I think I told you last time, the other set of orbitals. So there are two sets of solution in d orbitals. When L is equal to 2, we find that angular functions that can generate. There are two sets. एक है जिसमें कि electron density is directed in between the axis, while there is second type of axis, the solution where the electron density is directed along the axis. Z के along है, उसी लाइन पे है, Z एक्सिस वाली लाइन पे या X एक्सिस वाली लाइन पे. So x square minus y square means along the Z on the and along the x axis, along the y axis. Electron density along x, along y एक्सेस. ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि दो तरह का सॉल्यूशन है व्हेन दिस इज डन, एंड dz स्क्वायर इज हैविंग अ वेरी पेक्यूलियर शेप, वेरी डिफरेंट. बाकी सब में चार लोग हमें दिख रहा है, बहुत इजीली हम देख पा रहे हैं. वी ऑल्सो सी दैट, so in fact what was, when the initially this was solved, there were 6 solution which was obtained. जब हम इसकी बात करते हैं d orbitals की, so initially when Schrodinger equation was solved for what we say that 4 lobe orbitals, there was orbitals, they were in fact, it gives rise to 6 solutions, one set d, जो पहले हमने देखा dxz, dyz and dxy, so having electron densities along sorry, in between the axis, not along, in between the axis. Okay, there's another set of 3 orbitals which was visualized, dz square, d sorry, not this one, d. Second set was like this, dx square minus, let me put it like this, where is this, okay, dz square minus x square, dz square minus y square. So this was found to have existence
but these two were found to have मतलब theoretically जो बताया गया, predict किया गया, these two were not have individual existence. So what is expected? So these are the set of orbitals which were having these overall, you understand, these orbitals having electron densities. एक मिनट, इसको मैं दूसरे स्लाइड पे ले जाता हूँ, that will be easy. So what I am saying that यहाँ पे आपको दो सेट ऑफ सॉल्यूशंस था d ऑर्बिटल्स के लिए. Electrons densities in between the axes, lying in between the axes. And then, so initially the solutions gives you this kind of thing, and then you have solutions in which the electron densities lying along the axis. So along and in between. So this is, so we had three things, that dxz, dyz, dxy, and here we had three similar, in a similar pattern we had dx square minus y square, dz square minus x square, dz square minus y square, y square, z. So these two, but somehow, which was theoretically, these two did not have, these two did not have individual existence. In reality, individual existence. However, so इस केस में क्या था, जब हम कहें लाइंग अलोंग दी एक्सेस, सो एक्स और वाई के अलोंग है, इसमें क्या है, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इमेजिन करें तो इसका मतलब जेड के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा और एक्स के अलोंग होगा. डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कह रहे हैं तो जेड के अलोंग होगा एंड वाई के अलोंग होगा. तो बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू had real existence. Combination of two was found to have real existence. So when you are combining these two together, dz square minus x square plus dz square minus y square, they together give you d 2z square minus y square minus x square, and in short this is what we call as dz square in short. So actually जो इसका peculiar shape आ रहा है, so when you are combining these two orbitals, so both the individual orbitals dz square, z के along उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो z और z के along एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो जा रहा है, so that gets elongated, long, very huge, while in the xy plane there is spreading of the electron densities. So because of this, so what is that happening here is that when you are writing this, now you understand. So this thing, when you have, so the combination that we have is increase in electron density along z. When we are combining this, what we see, electron density along z axis, sorry axis यहाँ पे सिंगुलर लिखेंगे, axis 1 and 2, there is spreading of electron density in xy plane.
So because of this आपको पूरा जो यहाँ पे आ रहा है, so because of this reason you have this spreading of electron density in xy plane. So torus of or donut like of electron density, and this is getting elongated along z axis. So ये जो special चीज, so this, that's why you are getting this special feature for this. So this is the elongation along the z-axis. There is greater electron density because the two are getting added up, two z components of the two different axes, and there is spreading of electron density in the xy plane. So you are getting this torus of donut-like shape generating over here, a ring-like spreading of this thing. Ring nahi hai actual, it is what we call as torus. So इसलिए ये peculiar shape आपका dz square के लिए आ रहा है, और that is the reason why, अगर आप ध्यान से सोचे, because electron density along z is huge, as much larger as compared to in the xy plane. So and they are directed along the axis. So if this is used for overlapping with other, किसी और के साथ ओवरलैप के लिए यूज होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप पुट करेंगे इन द ओवरलैप रीजन, एंड सो इट इज़ प्रेफर्ड इन बॉन्डिंग. जब पहला बॉन्ड बनेगा दो मेटल मेटल क्लस्टर के बीच में, अभी हमने देखा, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो डी जेड स्क्वायर पहले यूज होता है. एक्स माइनस वाई स्क्वायर भी अलॉन्ग द एक्सिस वाला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट दैट विल टेक पार्ट later on in others. So that's why this one is preferred for sigma bonding, right? For because in the line of joining two nuclei you are putting greater electron density when you use dz square orbital, because along the z axis you have increased electron density as compared to any other orbital. Preferred for, ठीक है, first this can, it can also be used for this can also be used for sigma bonding, for sigma, but that one is preferred. Why it is preferred? So you now know that thing. Okay, so we have, so in a similar fashion for six lobed orbitals we can define so these are having patterns of the what f orbitals, no? Six lobed orbitals having six lobes. Having six lobes, in a similar fashion we can define these things, and you have just, so you have again 1 2 3 4 5 6. So this is six lobed orbital that we can think of. So in a similar fashion, so these are different, so seven such orbitals are there in F, and that's what we have here. Okay, so we'll talk about, so this is completes our discussion on the angular wave function and radial wave function. We'll talk about the other quantum. So Schrodinger equation only gave us three quantum numbers, n, l and ml, but there is something still missing, and that is the spin. So that was not initially thought. पहले वो सोचा ही नहीं गया था स्पिन जैसी कोई चीज इलेक्ट्रॉन के में है. वो बाद में एक स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट हुआ, जो इनिशियल जो श्रोडिंगर इक्वेशन में स्पेस क्वांटाइजेशन है उसको प्रूव करने के लिए किया गया था. उसको तो वो प्रूव नहीं कर पाया, कुछ और ही जो रिजल्ट आया दैट वाज वेरी डिफरेंट, एंड दैट लेड टू द ओरिजिन ऑफ स्पिन. स्पिन का जो पहला जो प्रपोजल आया वो वहीं से आया, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट. सो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास, द ओरिजिन ऑफ स्पिन. ठीक है, so so remember how we have, what we have discussed today, that it is double tangent sphere, and when the s orbital on squaring doesn't have any change in shape, but p orbitals when it is squared there is a change in shape, it looks like a dumbbell. Okay, so